You were saying something, Isha. उसको रखना है या देना है, हमारे अंदर का ही है पार्ट ना, रखना है देना है, इसमें मेरे को थोड़ा और बताना, चाहे इंडिविजुअल सेशन में बताना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये बड़ा होगा, तो ये चीज आप मुझे बताना, इसे Okay, रखना है लेना है, इसमें समझ क्या है? एवरीथिंग विच इज गिविंग यू हैप्पीनेस, लाइट फील होता है, यू नो, अच्छा फील होता है, लाइट, हम्म। दैट्स यू हैव टू कीप, दैट्स योर गुड. ओके एंड एवरीथिंग विच इज गिविंग यू, पेट में गुड़ गुड़ होने लगता है, हेवीनेस अजीब सा लगता है, दैट्स नॉट फॉर यू टू कीप. ओके, बट वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक पे चल रहा था, तो उसको थैंक यू बोल देना है कि जो मुझे हाँ, of दे रहा course, है, thank you इससे for कि मुझे पता चल गया है। giving me. See, any information, चाहे कोई कुड़कुड़ करके गया है हमारे सामने, तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि मेरे अंदर कहाँ कुड़कुड़ चल रही है. मैं, क्योंकि हर कोई आके आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सपोज दिस इज अ मिरर, अगर बाल ऐसे निकला हुआ है तो मैं ऐसे क्यों बोलूंगी, अरे तू बाल हटा, बाल हटा, बाल हटा. थैंक यू फॉर शोइंग मी द मिरर, अपना बाल ऐसे कर ले, है ना. हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो कुड़कुड़ चल रही है ना. अगर किसी ने आके कहा कि तू मतलबी है, मैं कहाँ खुद को सोच रही हूँ मतलबी. अगर मैं खुद को सोच ही नहीं रही मतलबी, तो कोई आके कहेगा ही नहीं ना. लेकिन मैं खुद की चीजें अपने अंदर छुपा के रखती हूँ, चल मेरे अंदर वही रहा है, लेकिन आई एम नॉट एड्रेसिंग इट. सो दैट्स व्हाई सेल्फ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू आर अवेयर एंड यू आर डूइंग द सेल्फ वर्क, you will understand कि okay, this is what I am actually feeling and I'm hiding from myself. That's why I need somebody else to come and tell me this. So if you are थैंक यू इतनी facing, नम्रता से कैसे आ सकती है उस समय? आ जाएगी ना धीरे धीरे. वाई यू ये वांट टू बी नम्र अभी, धीरे धीरे हम पहले से तो अभी नम्र हुए हैं ना. पहले जैसे हम मम्मी के साथ रिएक्ट करते थे, अब हम बेटर हुए हैं ना, अब हम और हो जाएंगे. आपके जो बच्चे होते हैं फर्स्ट, जो एलकेजी क्लास में आते हैं, वो 10th क्लास का व्हाट यू से नहीं करते ना ज्योमेट्री के सम्स. और हम उन्हें टाइम देते हैं, तो हमें खुद को एकदम से एक सेशन में ही, यार अभी बस अभी 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 होने दो ना, धीरे धीरे हो जाएंगे, हम भी तो बच्चे हैं ना, प्यार से धीरे धीरे करेंगे ना, है ना. Anything showing up for anybody else related to this? Otherwise, we can move on to the next. Okay. So next is judgment. What does judgment shows up in your universe? Where all you're scared to be judged? And where all are you judging abundance? किस किस की abundance को हम judge करते हैं सबसे पहले? Wow. This is a very interesting question. सबकी abundance को judge करते Yes, हैं. yes. सब Absolutely. आशिमा, फॉर एग्जाम्पल आशिमा ने अच्छा टॉप पहना है, तो दैट इज ऑल्सो आई एम जजिंग कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लाइक पता नहीं कहाँ से लिया होगा, यू नो, मे बी लाइक आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली मेकिंग दिस शिट अप राइट नाउ. But that's what I'm trying to say. If we're constantly, subconsciously, that's my understanding, constantly subconsciously judging everybody, everything. किसी का अच्छा हुआ, उसकी नौकरी लग गई तो एकदम से अंदर we're judging. किसी ने नई गाड़ी ली, constantly we're judging. Oh fuck, the other person has it, I don't have it. That's another form of judgment. Yeah. And most importantly for me, the biggest form of judgment, I don't know, conscious level I'm 100% firm in today's date and time, I don't judge, but subconsciously 200% I'm sure I might be doing that. But the biggest judgment victim in my life is myself. I have to put in so much conscious effort, and I'm doing it also, but I'm constantly judging myself, constantly. Like right now I'm so sleepy, but I just did not let myself skip this class because I was constantly judging myself that this is so important and I need to show up. Sometimes it's important to show that little slack and kindness to yourself, but I don't do that. I'm so tired and sleepy, but I will show up on the mat in next 15 minutes because that is my day, or I will judge myself, or I'll be incomplete. What will happen if you skip your yoga or you skip this class? What will happen? रीरी, एक रीरी होती है ना यहाँ चेस्ट पे पूरा दिन कि ओ माय गॉड आई डिडंट डू इट टुडे. It's not that anybody's going to die, something will end. No. Oh my God, I didn't do it. I didn't do it today. So everywhere we want to be the perfect versions of ourselves in our head only. Nobody is giving us a certificate. कोई कल बात करी थी ना, वो certificate नहीं देगा कोई bro. Everywhere we are held bound on कि हमें ऊपर जाके एक declaration मिलेगा कि तुम अच्छी जिंदगी जी के आए हो just because you showed up for all the lectures, all the yoga classes, all the therapy classes.
We will not get that above us. Hello. So everywhere we are giving us the heart attacks, mini heart attacks every time we're not showing up. Everywhere not perfect. Everywhere we are judging ourselves because that's what we are familiar with. That's what we saw. Okay, let's talk about guilt a little bit. It's also about feminine, but I think every feminine is here. और एक सेकेंड ये क्या हो गया हाँ so I think that's why any masculine energy never showed up for this class because we had to talk about the feminine energy. So guilt, every female DNA and our wombs, we carry guilt from our mothers because our mothers were guilty of so many things and our mothers carry their guilt from their mothers and then them. So the female DNA is carrying guilt from generations. So we have a sense of wrongness attached to us because we are carrying that guilt, and because of that guilt we have a constant need of habitual judging ourselves. और वो habitual judging गलत ही होगी, अच्छी नहीं हो सकती. वाओ तो कितनी अच्छी है, वाओ तो कितनी है, वाओ तो ये वाओ, ये नहीं आता है. कॉन्स्टेंट एक आवाज रहती है कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ओ माय गॉड ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया. और अगर कुछ कर लिया तो वी विल नॉट गिव आवरसेल्फ द परमिशन टू फॉल्टर, टू मेक मिस्टेक्स. जब हमारी क्लास के बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं, मुझे सीधे डंडे नहीं बजाने देते ना, हट साले कैसे कर दिया ये, हट साले, हम उसे प्यार से बोलते हैं. अगर 3-4 बार नहीं करता है तो जाके शायद हम चाटे, तो शायद अब मारते भी नहीं होंगे, प्यार से ही बात करते होंगे. आई एम श्योर these teachers will tell us. है ना, चाटे तो मारना अलाउड भी नहीं होता ना बच्चों को, प्यार से. We just cannot do it. Yes. But it's good, I guess. It has led to so many traumas. Now we are realizing after ages. And After 25, 30 years, the traumas are coming out. So, yes, bhai, na hi do हमारे kisi ko. आधे टीचर्स के ट्रॉमा थे ना, हमारे को तो. But you know what, Disha? Matlab, just out of context, the whole thing, like 1-2 years, whatever has happened of doing this, it has made me realize that even raising my voice with the child can hamper that child. So you know, मेरे साथ वैसा हो गया, वो 40 बच्चों में जो करना है ना भाई, do it. I am just there to facilitate you. I'm not just going to scold you all the time. You do it, it's okay. You don't do it, it's okay. Otherwise, I also used to get hard. I don't know मैंने कितने बच्चों को कहाँ हर्ट करा होगा यार, God forbid ना करा हो. But now I realize, जो मैं किसी की raised voice को इतने सालों बाद याद रख सकती हूँ, तो मेरी भी तो कोई रख सकता होगा. So everything that shows up, can you release that first of all, the guilt and anger and whatever, right, wrong, good, bad, for dominant, choice, voice, forward, and Ashima and all of you, can you be that beautiful, considerate facilitators for yourself? Yes. Your energy. Now everywhere you're saying yes, but you don't want to do this. Can you just say no if you don't want to do that? If it's heavy, Yeah. let's release the energy underneath this yes, because we say yes and we don't do that. Right, wrong, good, bad, forward, online shots, boys, forwards, and you, because we have a habit of continuously blaming ourselves, because we think that, you know, बचपन से ही हमेशा ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत, वो गलत, तो आदत हो गई है. Everywhere we don't want to leave that आदत, because हमें अपने बचपन से इतना ज्यादा प्यार है. We have everywhere एजिंग से हमें दिक्कत होती है ना कि भैया एज हो जाएंगे, तो we don't want to grow. We are still children in our head. And with being children, we have fears of our children. Everywhere हम physically तो grow हो गए हैं, but mentally हम फिर भी वो बच्चे हैं, and we are not allowing ourselves to grow. Right, wrong, good, bad, awkward, online shots, boys, forwards, and beyond. Everywhere we just still hellbound on becoming childish only and kiddish only with those fears, because they are familiar, and we don't want to grow old because we have taboos attached to being aged, and that's why we are actually happy being a child, because aging से क्या बूढ़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. But we are not understanding that aging is also maturity, it's also freedom. And everything that shows up, can we release that? Right, wrong, good, bad, awkward, online shows, voice, forwards. And what were we talking? Judgments. Everywhere judgment is necessary. Everywhere judgment is the only way we know how to be with ourselves. Everywhere we are judging ourselves left, right, center. Everywhere we don't allow ourselves the freedom to be who I want to be. Everywhere mistake is a very big thing that I will never allow myself. How can I do a mistake? Everywhere I'm being a Hitler to myself that no, I cannot make a mistake. Can you allow yourself to be a stupid person? Can you allow your anything and everything that doesn't allow you to be the stupid person? Can you release that? Right, wrong, good, bad, forward, online shots, boys, forwards, and you. What is a stupid? Who is a stupid?
Jyoti, Who talks silly, who behaves silly, who what doesn't is the gift have of a being say a in stupid something. person? Yes, what is the gift of being a stupid person? Why all the judgments and the Judgment. subtle judgments which we have of being a stupid person? Because our mothers and our teachers, while we were growing up, they all said, "Don't be a stupid person. Don't be a stupid person. Be an intelligent person. Be an intelligent person." And everywhere we are proving others that I am intelligent, and that's why I Yes. will not allow myself to be a stupid person. Can you release the need to be an intelligent person? Right from good, bad, awkward, all in short, voice forward. And a real intelligent person will not prove. Everywhere we are proving to them. Yes. See, the need to prove I am intelligent, I am this, I am that, is because I am not. So already some go stupid. Everywhere you're not acknowledging that you're stupid. And the real person who's intelligent, they will always be behave stupid. Think of any person who you consider as very intelligent and wise. Think of their behavior. किसी भी अपने टीचर गुरु या सो कॉल्ड पर्सन जिसको तुम्हें लगता है ना भैया इसमें बहुत ज्ञान है वो कैसे बिहेव करता है they will not behave like they will be the most stupidest kiddish everywhere But I have a question. yeah please What am I doing? Who am I doing this for? Like who am I trying to prove it to? Like if I'm showing up on the mat, even if I'm feeling shitty, we are who trying am I to doing prove it it to to? the society because there's a habit of proving because we But are you know what I mean? There is no society. Like दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा जयती ने आज योगा किया या नहीं किया. You know what I mean? तो मैं किसी का क्या उखाड़ रही हूँ? exactly your society is in your head darling everywhere you are society is living in your head and not outside you can you release some space for you and release that society from your head right wrong good bad awkward online shorts boys bros and everywhere we are actually living for the society but there is no society आके तुम्हारा योगा का फीस पे करेगी या तुम्हारी नींद के लिए गोलियां लाके देगी जब तुम्हें नींद नहीं आएगी या whatever थेरेपी के पैसे सोसाइटी देती है everywhere you're not allowing yourself to be who you are can for this one day ek din bacha hai na let's behave stupid all of us for this one day without judging yourself can you miss that yoga class I mean it's your wish can you miss being the perfect person for this one day and Isha is especially for you your soul blueprint is perfection Isha you're listening can you be imperfect Yes. for today and She a tomorrow Virgo. huh Yes. She a Virgo. she's a Virgo that's what perfectionist. I can't stand imperfection. अब तो जयती को भी पता चल गया है सोल ब्लूप्रिंट वर्गो मतलब perfection. ऐसा लगता है कि आपके कहने से पहले ही मतलब सब मोड़ दिया यूनिवर्स ने. आई लीव द रूम जहाँ पे मैं 7 महीने से थी. हाँ आज मैं इस रूम में आ गई. अपना मेरी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं अभी बीच में हो रही कि परफेक्शन मैंने छोड़ दी है यहाँ can पे. you be थोड़ी बहुत छोड़ दी. imperfect all of you Yes. imperfect stupid dumb क्योंकि हमें wisdom हमें perfection wisdom और क्या हमें full intelligent दिखना होता है so for today let's be stupid let's enjoy being stupid and I really want you to enjoy being stupid बातें बकचोदी dumb How do you be stupid? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है. How do you be stupid? Like I mean, so this is a stupid question Jyoti how stupid are you don't even know how to be stupid right what all that your voice overs and beyond see there's a judgment कि यार stupid हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि अभी दिशा ने Yeah, that is what stops you probably. Like even if you want to talk silly or want to behave silly, yeah. जैसे जैसे जैती ने अभी बोला कि you know what is how to be stupid मैंने बोल दिया कि you're stupid like and that's why deliberately I said कि you know बोला बेइज्जती Yeah. करने लगता है everywhere we are scared to कि भैया बेइज्जती ना हो जाए हमारी Yeah. and that's why we don't allow ourselves to have the fun of stupidity right wrong good bad awkward online shorts boys bros and your tarot का ना first card आशिमा tarot card reader फूल होता है ना एक कार्ड आता है ना फूल का एक कार्ड होता है फूल और एक होता है हाई प्रिस्टेस होता है क्या होता है जो राइट तो उस दोनों की जो जर्नी है अगर वो फूल ही नहीं होगा वो हाई प्रिस्टेस ही बन के बैठ जाएगा मास्क पहन के हम बैठ जाएंगे कि भैया हमें तो सब पता है नो एवरीथिंग आई एम इंटेलिजेंट आई एम वाइज ब्ला 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 फूल की जो जर्नी है वो शुरू होती है कुछ ना उसे कुछ नहीं पता होता लेकिन वो धीरे 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 करके फुल अगर मैं अपनी जो मतलब अगर तुम लोग इस क्लास में फुल इंटेलिजेंट बन के बैठ जाओ आई नो एवरीथिंग तो मैं कुछ भी दूंगी तुम्हें ऊपर से निकल जाएगा घंटा पता नहीं चलेगा बट अभी तुम यहाँ पे फूल बन के बैठे हो ना सब तभी तो अब्सॉर्ब कर पा रहे हो सो कैन वी बी फूल्स इन आवर लाइव्स एंड एवरीवेयर वी आर स्कैर्ड कि भैया फूल अरे भाई फूल जो बेइज्जती कर रहा है उसको भी मजे में लो ना
नो एक्चुअली बेइज्जती कोई करता नहीं है, हमारे अंदर खुद ही की बेइज्जती चल रही होती है, हमारे हेड में होती है वो बेइज्जती। एवरीवेयर वी आर स्केयर्ड टू बी फूल, कि लोगों को पता चल जाएगा हाय हाय मुझे तो ये पता ही नहीं है, हाउ कैन आई बी सो डम। कैन वी रिलीज दैट नीड or the mask which we are wearing? I don't know. Like, okay, I just wanna, Shorts, boys, clothes, and men. yeah, I just wanna add on, like, we Yeah. can't be stupid and fools at workplace, right? We need to be a little sorted there at least, and that's the most of the time where we are. Okay, okay, very good. So everywhere you think is stupid मतलब बिल्कुल ही गए गुजरा हो जाना. Stupid is the energy of not taking the pressure to prove to It's anyone. basically fun, right? It's the energy Being of having fun and not proving that I am intelligent. Can you not prove it to your principals and your Yeah. students that you are a teacher and you are an intelligent teacher and you are a good teacher? That's stupid. Yeah. Can you stop proving? Because see, there's a pressure in proving that you know I'm a good teacher, I'm a good teacher, Yes. I'm a good teacher, or I'm a good worker, whatever. I'm a good person, first of all. I guess that proving वाला ना since childhood ही है, तो वो चलता ही जा रहा है, Everyone चलता ही is जा रहा है. hellbound on proving others that I'm a good child, तो मुझे और attention. And everywhere younger children के लिए younger siblings के साथ तो ये होता है because the elder sibling has I taken know. attention. आधी जिंदगी झंड हो जाती है younger siblings की. So everywhere, see, बेटा हो बड़ा तो और ज्यादा. Isha, you are also the younger one or what? I am an elder one. You're the मैं कहने वाली थी हाँ मेरी I जिंदगी am में also झंड the है. elder one. आधी जिंदगी elder one की भी झंड है. हाँ झंड है मुझे. I can जिंदगी understand सबकी that. झंड है. Because elder one, I know what traumas are there. So first of all, everywhere we are बचपन से we are proving to our mothers because that we are the good person. तो हमें थोड़ा attention मिल जाएगी. So first level of proving वहाँ से start हो जाता है. Right, wrong, good, bad, awkward, online shorts, boys, covers, and beyond, and everywhere we are hellbound. एक्चुअली हमारे जीने का तरीका ही है ना कि भैया प्रूव करेंगे तो अटेंशन मिलेगी मम्मी पापा की, फैमिली की, ये अच्छी लड़की है, मार्क्स अच्छे लाएगी तो अच्छा परिवार में थोड़ी इज्जत मिल जाएगी, हार्ड वर्क करेगी तो अच्छा हो जाएगा. सो एवरीवेयर प्रूविंग या कुछ करना, डूइंग 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 हैज बिकम आवर लाइफ एंड वी डोंट इवन नो हाउ टू बी द रियल वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स because since childhood we are trying to be somebody who's constantly doing something, and everywhere there's a constant need of doing, Jyoti, Ashima and Isha, where we don't allow ourselves to just sit and relax. Everywhere we're not ready to relax and just chill. Everywhere we don't even know the definition of chilling. Can we release that need of proving, doing, being? Right, wrong, good, bad, awkward, online shorts, boys, covers, and I really want you all today to just be stupid, dumb, and what? Idiots. Where you don't have the need to prove, not even to your husband, not even to your family members, not even to anybody. Can you be that energy who you are? Any questions? Good. अच्छा. Bye. Sorry. 7:30. Bye. Yeah. Okay. Bye. Bye. Any और questions? जैसे आपने अभी हाँ जजमेंट वाला आपने कोई क्वेश्चन दिया था अभी थोड़ी देर पहले जजमेंट वाला कोई क्वेश्चन दिया था आपने ना उस समय दिमाग में ये चल रहा था, ये चीज तो समझ आ गई कि कभी आपसे बैठ के जो भी आप कर रहे हो मेडिटेशन या ब्रीदिंग जो भी कर रहे हो वो भी उस दिन ठीक से नहीं होती उस दिन से बेटर, तो डोंट जज योरसेल्फ. ये बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ बहुत गई अच्छी और बात. आपसे मेरे से गलतियां होती है एक्सेप्ट करने लग गई. बट प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है. तो ठीक जो है. आपने बोला ना योगा क्लास छोड़ सकते हो आप, मैं बैठना नहीं, अब बैठ के मेरे को नहीं मिल रहा अभी, मैं ऐसा वाला मजा नहीं मिल रहा जो परसों मिला था. बट हाँ बट छोड़ We are comparing from our past. You know, past भी नहीं छोड़ा जाता ना हमसे कि ये कल ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा ही हो गया. We have a because एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया ना, कल ऐसी मेडिटेशन हुई थी आज ऐसी नहीं हुई तो मजा नहीं आया. क्या हम आज में जीना शुरू कर सकते हैं ईशा? आज का मजा आज में ही ढूंढे और फिर इसे भूल जाए, फिर कल का मजा कल में ढूंढे और उसे भूल जाए. Can we release the need of holding? Because obviously we are females, so we have a problem of receiving and making babies of everything, right? का पहाड़ बनाने की आदत होती है, कुछ भी आएगा
से पकड़ के बैठ जाएंगे. Females have a problem of letting go. So for that, do a lot of feminine healing. Feminine healing is something, because an empowered female will never receive things which are not for her. She knows that this is of my value or this is of not value. And she will release. I don't want to hold on to anything which is garbage, है ना? Garbage नहीं रखना मुझे अपने womb में. Where a female stores, she stores everything in her womb. And she makes guilt and shame her companions. You stop making guilt and shame your companion. अभी ये सब हम आगे करेंगे. Obviously, we will do masculine feminine, so you will understand it better. But for now, just release. It's no point keeping all these things. And everything that shows up, can we release that guilt, shame, and subtle emotions which are showing up in our energetic memories? Right, wrong, good, bad, awkward, all night shorts, boys, girls, and girls. Anything else?